On the eve of his hunger strike against black money, Baba Ramdev has remained adamant on his fight against corruption, indicating softening of course of his stand ahead of the crucial round of talks with the government. And Jaguri is joining us live for more details. Jaguri, when can we expect a final word? We know hectic parleys are currently on in the capital. Right, Niranjan, now we are seeing this two-face of Baba Ramdev. On the one hand, he's appealed to his followers that he's going to launch his satyagrah, that there's no way that he's going to be dissuaded by the government. But let me also tell you, right after he addressed his followers, he sneaked out here with his chosen followers to golf links, where we are told that he's going to hold meetings with three central ministers, including Kapil Sibal, PK Bansal and Subodh Kanzai. And not a mention of that was made by him while he was addressing his followers. Even I tried to put this question before Baba Ramdev, whether he's going to meet the ministers. He just turned his face on me and went away. So really, this is the ambiguity that Baba Ramdev is creating here. On one hand, where he's showing this determined face that there is no way that he's going to bow down or buckle under any sort of pressure. But on the other hand, he's already, engaged in a dialogue with government. At any opportunity, he is going there and meeting them and engaging in dialogue. So one will really have to watch out. Will Baba Ramdev really keep his promise that he made a short while ago to this address gathering here at Ramlila grounds, or will the government succeed in dissuading him? That's the big question that one will have to closely follow. But we are told that Baba Ramdev, he just left a few minutes ago from here, from Ramlila grounds, and he's gone to golf links to meet the three central ministers. Now, what is the dialogue going to be about? Baba Ramdev did address the three key points that he's been negotiating with the government. The first point is that he wants the black money stashed away in the foreign banks to be brought back. The second was the reforms in the Land Acquisition Act, and the third, the fast-track courts to deal with corruption cases. So he says that he's sticking to his ground, but one will really have to see what the outcome of this crucial meet with the central ministers would be. Back to you, Niranjan. Stay with us, Jaguri. In fact, he spoke a short while earlier. Let's listen in. जो भ्रष्ट और बेईमान गद्दार लोग हैं, जिन्होंने भारत माता के साथ धोखा किया है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि भ्रष्टाचार मिटे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कालाधन वापस आए, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये भ्रष्ट तंत्र ठीक हो, क्योंकि कुछ लोगों ने लोकतंत्र को षड्यंत्र करके लूट तंत्र और भ्रष्ट तंत्र बना दिया। वो भी अपना पूरा जोर लगाएंगे, लेकिन अब जब पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त आक्रोश है और पूरा देश, सब जातियां, सब मजहब आप यहां मंच पर भी देख रहे हैं, हमारे मौलाना साहब, हमारे रिजवी साहब, ये तो अभी अभी आए हैं और केवल अब ये तो कुछ आप मेरे साथ मंच पर देख रहे हैं, ये कोई सांप्रदायिक या राजनीतिक आंदोलन नहीं और नहीं हमारा कोई अंडरग्राउंड एजेंडा है, ना कोई हमारा राजनीतिक सांप्रदायिक एजेंडा है। हमारा एजेंडा है देश बचना चाहिए, काला धन हिंदुस्तान को वापस मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए और ये भ्रष्ट व्यवस्थाओं के स्थान पर श्रेष्ठ आदर्श व्यवस्थाएं राष्ट्र में होनी चाहिए। सरकार के साथ जो प्रथम दौर की बातचीत चली है, उसने उस बातचीत का सारांश यह है कि एक दो मुद्दों को छोड़ करके सभी मुद्दों पर प्रथम दृष्टया एक अच्छी सहमति बनती नजर आ रही है। करोड़ों लोगों के ताप, आप सबके साहसपूर्ण और सात्विक संकल्प से अब चाहे वक्त कितना भी लगे, हमारा संकल्प है और ये सारी दुनिया देखेगी, हमारे सारे मीडिया के भाई खड़े हैं, मैं सबके सामने इस बात को पूरी दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं कि हम किसी व्यक्ति या पार्टी की आलोचना नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मुद्दा व्यक्ति या पार्टी है ही नहीं, हमारा मुद्दा
भ्रष्टाचार, कालाधन और भ्रष्ट व्यवस्थाओं में परिवर्तन है। और हम चाहते हैं ये व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, ये कालाधन हिंदुस्तान में आना चाहिए, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। फिर किसी भी पार्टी की सत्ता हो, कोई भी देश के साथ धोखा और गद्दारी नहीं कर पाएगा और हिंदुस्तान अच्छा बन जाएगा।